आपने आया। Exactly, because you cannot be that much influential if you are not even honest with yourself. First, you have to be honest with yourself. First, you have to change yourself. Exactly, sir. Yeah. Shall we have participants? Great to have everyone now. Yes, Miss Madiha, how are you doing? Assalamu alaikum, sir. Walaikum assalam. How are you doing, Miss Madiha? I'm fine, sir. What about you? Alhamdulillah, I'm doing great as well, as always. And Miss Aisha, what about you? Assalamu alaikum, sir. Walaikum assalam. How are you doing, Miss Aisha? Sir, I'm fantastic, Alhamdulillah. Okay, that's great. That's great. Question from you. And Mr. Okas, what about you? Let me unmute you. Alhamdulillah, sir. I'm fine. And basically, I'm traveling right now in the bus, and I will reach at my destination after 15 to 20 minutes. Okay, that's great. That's great. But Okay. in the meanwhile, I will try to keep on starting class. Okay. Okay, thank you. So yes, you can take your time and join us soon after that. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. I'll drop the one more message in the group and then we'll start the class. Okay, also I'm sharing the attendance so that you could mark yourself as attended. Yes. अटेंडेंस भी मैंने शेयर कर दिया काइंडली आप लोग फिर अटेंड भी कर ले वो अटेंडेंस से मार्क करने खुद को चलिए जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सो आई होप यू विल बी यू माइट बी रिकॉर्डिंग अ बिट कि हमारा लास्ट लेक्चर किस चीज़ के हवाले से था सो वो जो था ना इट वाज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ देयर इज एंड देयर आर सही जब हम इशारतन किसी चीज़ के बारे में बताते हैं एंड व्हेन वी आर डिस्क्राइबिंग समथिंग सही है जब हम अपनी सामने पड़ी हुई चीज़ों को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं तो उसके हवाले से हमारा जो था ना लास्ट टॉपिक था एंड टुडे okay, that was regarding the present, but today our lecture is going to be, our class is going to be about the past and about the future. Okay, how we tell things in the past and how we tell things in the future. कि वही चीजें हम okay, it's going to be easy. सही है आज की क्लास भी easy है comparatively क्योंकि इसमें सारा का सारा structure वही use हुआ है. In the previous class we were using is and are. यहाँ पर इस क्लास के आज की क्लास में सिर्फ स्ट्रक्चर सेम रहेगा सिर्फ और सिर्फ क्या है हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब है वो चेंज होगा सही सो हियर टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द स्ट्रक्चर देयर वाज या फिर देयर वर which refers to the past and then we are going to learn about the structure of the future there will be और फिर उसके बाद आप लोग को थोड़ा कार्डिनल्स एंड ऑर्डिनल नंबर्स के हवाले से आगाही दी जाएगी which is terms तो मे बी आप लोग के लिए न्यू हो ये टर्म्स आप लोगों ने शायद कभी सुनी ना हो और मे बी यू माइट हैव कम अक्रॉस तो ये क्या है बट दीज आर इजी ये जो है ना नाम से थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है बट दीज आर इजी टर्म्स एंड देन finally we'll be doing a bit of interesting activity we'll be doing some tongue twisters सही for fluency अच्छा जी let's continue so yes let me share the slide कि हमने पिछली क्लास में क्या किया था जी so all of you are well aware कि हमने पढ़ा था there is के बारे में and there are के बारे में the structure of there is and there are so also we actually you discussed and also I did a bit of we discussed a bit of weather तो उसके हवाले से हमने सीखा and then you also told me you also described all of this kitchen जो कि किचन में क्या क्या चीजें पड़ी हुई हैं यहाँ पिक्चर में तो उसके बाद हमने क्या सीखा you also described this picture of a sunny day on the beach and then, and most of our class was about describing. So yeah, but today it is not going to be that much describing. Actually, it is going to be a bit descriptive. But yeah, you will be having a bit of creation. You will be creating it on your own instead of me showing you pictures here. See, so yes, you also described these two pictures. So one was that of a train station, and another was that about children doing their own activities. And then we also learned about the position of
certain things कि किस तरह हम एक पिक्चर में मुख्तलिफ पोजीशंस दिखाते हैं. Then you also described me the picture of some girls doing yoga or some sort of exercise. Okay, we also learned about quantifiers कि किस तरह जो है ना we can use these quantifiers. Quantifiers are actually things जो क्या करते हैं जो कि हमें नाउन की क्वांटिटी के बारे में बताते हैं. सही है. It not a specific quantity but a general quantity. तो उसके हवाले से हमें बताते हैं. तो so we also learned about this. We also learned about how to make negative and interrogative of those sentences, and also how we are supposed to use any when it comes to questions. And then you also described another picture in the classroom. ओके. और फिर उसके जो है ना हमने देयर इसके हवाले से 8 मुख्तलिफ पैटर्न सीखे, जिनमें से पहला वाला पैटर्न किस चीज़ के हवाले से था कि व्हेन यू डोंट हैव एनीथिंग टू से, सो देयर इज नथिंग टू राइट एनीमोर, कि लिखने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा. कि जब आपके पास कोई चीज़ मजीद काम करने को कोई भी काम नहीं रहता, सो देयर इज नथिंग टू का स्ट्रक्चर आप यूज़ करते हैं. Then you use the structure of when you talk about your favorite brand. जब आप अपने फेवरेट ब्रांड के हवाले से बात करते हैं, there is nothing like यूज करते हैं उसके लिए आप. सही. फॉर एग्जाम्पल there is nothing like signature for shirts, के शर्ट्स के लिए सिग्नेचर का जो ब्रांड है इसकी तरह बेहतरीन ब्रांड और कोई नहीं है. अच्छा. देन यू ऑल्सो टॉक्ट अबाउट फेवरेट एक्शन, कि आपका जो कोई भी एक्शन है, कोई वर्ब है, फेवरेट कोई काम करना है, उसको किस तरह स्ट्रक्चर में बयान करते हैं. देयर इज नथिंग लाइक ईटिंग आइसक्रीम इन अ रेनी डे, कि आइसक्रीम खाने से बेहतर एक बारिश वाले दिन पे आइसक्रीम खाने से बेहतरीन काम कोई और है ही नहीं. सही. सो यू आल्सो लर्न अबाउट दैट. एंड देन टू फर्दर स्ट्रक्चर्स इन व्हिच वन वाज showing the reason or purpose of something and another was showing no reason at all. कि एक में हम बताते हैं कि कोई काम करने की वजह बता रहे होते हैं, there is a point to talking to you, या there is a point in talking to you. सही. कि आपसे बात करने के पीछे भी एक मकसद है. So this was a structure. और जब हम कोई पर्पस ना बताएं या जब कोई काम करने में हमारा मकसद ना रहे, तो उसको हम किस तरह बयान करते हैं कि there is no point in talking to you, या there is no point to talking to you, कि आपसे बात करने का कोई मकसद नहीं, कोई मतलब नहीं. Then there is one third last structure कि when you're talking about your favorite person, कि जब आप अपने फेवरेट बंदे के बारे में बात करते हैं, पर्सन के बारे में, there is no one like my father, कि मेरे वालिद की तरह कोई नहीं है. सही. And then two more structures कि there is a way to when we have a solution, जब हमारे पास किसी चीज़ का solution होता है या नहीं होता तो कैसे बताते हैं. जब solution होता है कि there is a way to talking to him या to talk to him, कि उससे बात करने का भी एक तरीका है. और जब हमारे पास किसी चीज़ का solution नहीं होता तो उसके बारे में कैसे बात करते हैं. There is no way to get rid of this problem, कि इस मसले से निकलने का कोई हल नहीं, कोई चारा नहीं. And okay, then I also gave you homework. उसमें से मुझे तो स्टूडेंट ने सेंड कर दिया था, and I also gave my reviews. So now coming towards the lecture of today. Okay, so we have done this. Now talking a bit about change. Okay, so today's question is by the way, you can see on the picture here कि always want open new doors. सही. Is change something? So my question here is change something good or bad? And how have you changed throughout the years? के क्वेश्चन मेरा ये है कि आप किस तरह जो है ना ये चेंज को क्या कंसिडर करते हैं, कि क्या चेंज बदलाव कोई अच्छी चीज है या बुरी चीज है. और थ्रू आउट द इयर्स आप जितना ग्रो कर रहे हैं तो आप किस तरह चेंज हुए हैं. हैव यू चेंज फॉर द पॉजिटिव और द नेगेटिव, कि आपने खुद में जो चेंज देखा है, इज इट पॉजिटिव चेंज और इज इट नेगेटिव चेंज. बाय द वे, द कोड हियर मींस कि ऑलवेज वांट ओपन न्यू डोर्स. सो ये जो पिक्चर है ये चेंज को क्या करती है, इट एक्चुअली सपोर्ट्स चेंज. सही. कि जो पुराने तरीके हैं वो आपके लिए नए दरवाजे नहीं खोल सकते. मतलब कि अगर आप पुराने तरीकों से ही जिंदगी गुजार रहे हैं तो जरूरी नहीं कि वही पुराने तरीके हमेशा आपके लिए काम करें. तो ये समटाइम्स एक्चुअली situation does different situations do require you to change yourself. See, to change your ways in which you tackle situation and problems. So yes, who would like to go here first? I'll repeat the question again कि is change something good or bad, कि ये जो बदलाव होता है, ये जो रवैये का बदलाव है, किरदार का बदलाव है, ये क्या कोई अच्छी चीज है या बुरी चीज है. और आपने खुद में ऐसा कौन सा चेंज देखा है जिसको आप पॉजिटिव या नेगेटिव कंसिडर करते हैं. थैंक यू वेरी मच मिस्टर उस्मान, स्टार्टिंग विद यू. Yes, sir. जी. Sir, change
in something is very important, and this is very good in our lives. Change throughout the years is also very important, and we have to and we must have to adopt the change, because suppose in our businesses we follow the ledgers on the old methods like registers, but now we are tackle all these things on a computer in seconds. In our purchasing or in our transaction in our country or other cities. Before the couple of years, we travel to pay other companies, and they email, they send fax or mail of their slip. But now we can in seconds transfer the money and receive the luggage or any equipment that we have ordered. And in our home, there are a lot of changes in our children's उनकी तरबियत के लिए भी. So we have lot of instruments, online teaching that we are involved in online teaching. So this is the change in throughout the years in study and other activities in our life. Okay, that's great. So you are also a big supporter of change, I guess, Mr. Osman. Yes, okay, thank you very much. Now, who else would like to answer this question and give their own opinion based on change? Okay, is it change a good thing or a bad thing? G. Okay, great, Miss Aisha. G. Sir, in my opinion, every change and every new step is very successful. We should change because it's a human nature. They don't like similarity. Exactly, yeah. And we always change. Allah bless us with 4 weathers. So we enjoy 4 weathers, and this change make us happy. And of course, because of change, we are learning these sessions. And if we don't have the change, so we can't survive. And I like the change in myself is this year I took challenge of 2 things. One of this learning English. So Alhamdulillah, I'm taking 2 online classes to improve myself. And the other one is I want to learn driving. So I am just making plan, and I'm brainwashing myself. So 2-3 days ago I went there, and I just talked to them how they will teach me. So I was just making plan, but this time I didn't initiate, and this is the bad thing. I didn't initiate. 6 months left. And the good thing, I am spending a lot of time with my English, learning English. But I think our learning power is getting slow day by day with the age factor, I think. So within 1 month we learn a lot, but what we target is set, it's not achieved right now. Inshallah, you will achieve it if you are that much willing, because people at your age, at this age, and even in new generation, actually people are not giving that much attention to their goals. हमें जो है ना जिंदगी में कभी not even our parents tell us to have goals. We are actually given a straight path of doing education and then applying for a job and doing a bit of more education to get even a better position at the job. So I think having personal goals, that is one of the basic and most important things, because these are the things that give meaning to your life. And yes, I would say you are quite brave. Yes, Yes, sir. 18 years left
I left my studies. So after 18 years, it's a big challenge, and being a housewife, it's also a challenge for us. Exactly. Yes, We exactly. can't But more spend time Mhm. while educating and learning some things. We have specific time to give it. But it actually does require bravery to, even after 18 or 20 years, you are still coming back to the education again. That requires Yes. bravery, and I would say you are quite brave enough. Thank you very much, Ms. Aisha. Ji, yes, Ms. Madiha, you want to give your opinion, share your opinion with us on change? Yes, sir. Yes. Uh, Sir, a positive change is always good, but we never have positive change. Always, sometimes situation and behavior case uh, some negative change. But I Yes. am personally changed and became more confident and mature. Yes. I am I am very changed before in 5 years because I am married in before 5 years and teenage. Alhamdulillah, after 1 year I have baby, so I am Great. very well changed in my life. Alhamdulillah, and my study in stop currently. Uh, Okay. then I started after marriage, uh, and I continue course English course and study both. Uh, Currently, I am I have try well. I am success in both study and Inshallah, you English will. language Yeah. course. Inshallah, Yeah, I inshallah. have two daughters with housewife. It's so difficult for me, but I try well. Inshallah, Well, that's I yes, and inshallah, your efforts will bear fruits, will bear actually sweetest of fruits. Yes, that's my prayer for you. And you are just like Miss Aisha, you are, and all of the ladies who are actually after even in batch two, we had two ladies who are housewives and who are still learning English for the sake of their kids. So all of you ladies are actually quite much brave who are learning not only for themselves but for their kids and for others as well. So yes, one thing is that the environment, that the context changes you. That is something I would say quite easy. But when you are focused on changing yourself, that is a bit harder. And in your case, both of your cases, you are actually trying to change yourself, and I really appreciate you for that. Yes, thank you very much, Ms. think Madia. My pleasure. Okay, yes, I have a question here. जी अंसार वालेकुम अस्सलाम. अच्छा, अंसार इसका मतलब ये है, let me just अच्छा जी, so yes, हाँ जी, उस्मान हबीब ने भी आपको आंसर दिया कि पुराने तरीके नए दरवाजे नहीं खोलेंगे. तो अंसार इसका मतलब ये है कि, और इफ यू वांट टू, तो आप भी इस पे बात कर सकते हैं कि आप जो है ना हमेशा पुराने तरीकों से नहीं चल सकते, आपको खुद को बदलना भी पड़ता है. सही. तो आप ये बता सकते हैं कि आपने खुद को किस तरीके से बदला, और आपकी जिंदगी में जो बदलाव आया है, चेंज आया है, वो अच्छा बदलाव था या बुरा बदलाव था. सो यू कैन टॉक ओवर दैट इफ यू वांट टू. तो जी आप फिर मैसेज मुझे कर दें, टेक्स्ट कर दें. सही आंसर ये चैट बॉक्स में, अगर आप इस पे बात करना चाहते हैं इस टॉपिक पे. ओके, मीनवाइल we have yes, Miss Kawan, if you want to talk. Okay, Miss Shahida. जी Miss Shahida, I need one more person to talk over change, और उसके बाद we'll proceed ahead. जी Mustafa. Thank you. Okay, I'll continue then. अच्छा. So for this Hello, one, Assam sir. Walaikum Assalam. How are you doing, Mustafa?
Sir, my time is 40. Okay. I drink a tea. I take a tea. Okay, okay. So could you tell us a bit about change? Okay. जी कि ये जो चेंज है, तब्दीली है, क्या ये अच्छी चीज है या बुरी चीज है? Okay. Okay, Shireen, let's continue. So for this one, I want all of you to unmute yourself. G for the vocabulary, because we are going to do the vocabulary here. Acha ji, so we have words again, and this time, acha. Interestingly, this time we have British native words. तो इसमें जो है ना, अब these are some of the words जो आपने पहले कभी सुने ही नहीं होंगे. हालांकि when it comes to Urdu translation, you are well aware, even in American words, you are well aware of these words. But when it comes to British words, आप लोग पहली बार ये सुन रहे होंगे और आप लोग को बड़ा अजीब भी लग रहा है. सही? So the first one is easier. पहला word है, and kindly repeat after me. The first word is comprehend. 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 Yes. So comprehend का मतलब समझना, किसी भी चीज को समझना. So in order to solve math equation, you have to comprehend it first. कि मैथ्स के सवालात समझने के लिए आप मैथ्स के सवालात हल करने के लिए पहले आपको उनको समझना जरूरी होता है. सही? The second word is pavement. 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 Yes. Pavement मतलब फुटपाथ. ये you are well aware कि फुटपाथ कहते कैसे हैं. सही? So रोड की जो साइड पे फुटपाथ होता है, that is used for walking. So pavement, there used to be pavement in older times, but not anymore. कि पहले फुटपाथ हुआ करते थे, पर अब फुटपाथ नहीं होते. सही? The third word is brolly. Brolly. Jolly. Trolley. Yes. Brolly means chhatri. By the way, what other word do you use for chhatri? Umbrella. Umbrella. Good. So अच्छा, umbrella जो है ना, now umbrella is American word, और उसके लिए British word क्या है? We use brolly. सही? So in British English. So if it is raining outside, you better take a brolly with you. कि अगर बाहर बारिश हो रही है तो बेहतर होगा कि आप अपने साथ एक छतरी ले जाएं. The next word is loo. 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 Yes. So and I want you to repeat clearly. ये जो बाकी मुझे 3 बंदों के अलावा किसी और की आवाज नहीं आ रही, so kindly आप लोग खुद को अनम्यूट कर लें. सही? तो जी, और मेरे पीछे जो है ना, आप ये वर्ड्स रिपीट करें. ओके. So loo का मतलब बैतुल खला, which we also call washroom. सही? या जैसे हम बाथरूम भी कहते हैं. So and loo is a British word. So kids usually go to loo after drinking a lot of water. कि ज्यादा पानी पीने के बाद बच्चे अक्सर बैतुल खला जाते हैं. Okay, the next word is queue. Q. Yes, good. So queue कहते हैं कतार को. We also call it a line. So a lot of people were standing in queue outside of bank. कि बैंक के बाहर बहुत ही ज्यादा लोग कतार में खड़े थे. Okay, the next word is mate. 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 Yes, mate is called, yes, mate दोस्त को कहते हैं. This one is easy. So there are some people who have only 2 to 3 mates. कुछ लोग होते हैं जिनके 2 से 3 दोस्त होते हैं. Okay, the next word is chuffed. 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 Yes, chuffed. जी. So chuffed means खुश. जी. खुश रहना. सही? To be happy. This sound is cha or sha. You have to add a bit of sh in this sound. सही? Shuffed. थोड़ा सा sh की आवाज आनी चाहिए. Shuffed. Just like like shoved. chef. Exactly, but not too much. बहुत ही ज्यादा नहीं, हल्की फुल्की sh की sound हो उसमें. Like shoved. जी. Okay. Yeah, so shoved means खुश. A lot of kids in the olden times used to be shoved, but nowadays they only use their cell phones and are happy about it. तो पुराने वक्तों में बच्चे जो थे बहुत खुश रहा करते थे, लेकिन आजकल वो जो है ना, वी कैन से दे आर बिजी इन देयर सेल फोन्स, और आजकल जो है ना वो अपने सेल फोन्स में, मोबाइल फोन्स में मसरूफ रहते हैं. द थर्ड लास्ट वर्ड इज नेकर्ड. Knackered. 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 नेकर्ड एंड के जो है ना इसमें साइलेंट है. सही? सो नेकर्ड मींस थका हुआ. जी.
Knackered, and in American English, we call it tired. So he was knackered to bone after doing a lot of work. तो बहुत ज्यादा काम करने के बाद वो बहुत ही ज्यादा थका हुआ था. The second last word is chap. 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 Chap means लड़का. There were a lot of chaps in the classroom. तो क्लास में बहुत ही ज्यादा लड़के थे. And the last word is tally. Tally. Teddy. Tally. So tally means television or TV. You are well aware of this one. So people in olden times used to have tallies, but now they have LEDs. कि पुराने वक्तों में लोगों के पास टेलीज हुआ करते थे, टेलीविजन होते थे, लेकिन अभी उनके पास LEDs हैं. Right? So okay, I'm muting all of you now, and I want two people to have a conversation. So you can have a conversation. You can using these words. It will be better, a lot better, if you use these words in your conversation. Ji, starting with Ma'am Afsha and sorry, Ma'am Aisha and Usman Habib. Ji. Yes, sir. Ji, so Usman Habib, kindly take the start. So we have to comprehend our lessons, then we have to move ahead. But do a conversation. Say a conversation करें. Pick a topic. Let me think about the topic. Let's say कि both of you are traveling in a bus. सही है. Miss Aisha and Usman Habib. You are traveling to Okay, sir. somewhere. Let's say you are traveling to Karachi. So अभी आप क्या कर रहे हैं? You are discussing different views. सही है. तो जो views गुजर रहे हैं पहाड़ी इलाके हैं मुख्तलिफ किस्म के. So you have to discuss over it and try to use these words. सही? Sir, okay. Yeah. We tried our best. It's okay. Sasha, we have to comprehend the total total distance for the Nathia Valley and Kashmir Valley. We have to comprehend the tracks. Usman, I think we should take different words because my mind is working to start from the chap. Just like Okay. look at the chap, he looks knackered, and the other one is shoved because shoved with his mate, and they all are making a queue and in front of the loo, and look at the pavement. The chap is with brolly because of rainy weather, and telly they are they have the old telly in their hand. I don't know where they are going. Did you got what I want to say? No, so you are actually describing a chap, a boy who is having a television in one hand and an umbrella in another hand. From Yeah, what I and got. Yes, and and it's he's standing raining. on the pavement. Yeah. Can I comprehend or not? But Yes. actually, I don't know how to communicate with Usman on these words. I just explained okay. my I think own You can- I words. think I think we have a conversation topic that sir give us, and Yes. we So- have to use these words step by step with different words It's up to in you. different sentences. See, you can use. देखें, you have to use it when a context shows itself. कि जब भी एक context आए तो उसके मुताबिक इन words को use कर सकते हैं आप लोग. सही है. इतना कोई देखिए हमारी जितनी conversation होती है. I never care that much about rules. They don't have to be that strict. सही है. उसमें आप अलग words भी use कर सकते हैं. जब आपको लगे कि मुझे इनमें से कोई word ठीक लग रहा है, then you can use this word. Yeah. जी, carry on. So now it's your turn. You start. Then I will try to answer you. Okay. Now I will start from the second word, pavement. So I think in the morning that we will
We will walk in the morning on pavement, because there will be rain in Murray, and we must have to carry the brolly with us. Yeah, of course, you should always keep brolly with you, okay? Because there are too much rain and it's unpredictable weather there. And I think there maybe in Murray at the loose side, we must face the queue. Yeah, but I don't want to use public loo because they are so messy and smelly. So we should avoid public loo. So I think I will travel with my mate, and I will be very chuffed with him. Oh, so nice. I think you will not knackered with them. Exactly. After long travel, I will not lacquer due to my conversation with my mates. Yeah, of Mhm. course. Because company Oh. does matter. Mhm. So I think Oh. there are a lot of chats on these sites. So we have to, How many chap you are traveling? how many? How many chaps you are traveling to You Murray? can say how many chaps you are traveling with to Murray. कितनों के You are साथ जा रहे हैं जी? I will travel with two chaps, and we will enjoy there while uh, watching movie on telly. Oh, you are still using Tele? Yes, sometimes I use telly. Oh, old is gold. No, it's my father's telly. Yeah. Mhm. My father also Okay. have a Mm. small tape that was used in old days. So thank you. My aunt also has small Tele in her house. Yeah, nice. Okay, cool. Because Okay. these days kids Mm. don't know about Tele. They just know the LED. Because my kids don't know about the PTCL phones we were using. Mhm. My aunt has the phone, and when we went there, they pick up the phone and just play with them. What is this? Mhm. Yeah. So yes, I think that is enough. Thank both of you, Mr. Osman and Mrs. Aisha. अच्छा Sir, जी, is it Thank on you. your expectation level or that it's not? जी, Sir, our conversation is up to the mark or not? yes, yes, it was. लेकिन I never actually judge anyone on कि किस level तक जो है ना आपने अच्छी conversation की. You just have to Sir, do but the thing and जी. you have to judge and you have to guide us Actually, yes, because you are teachers. If you will yes, not because guide us and if you, yes, yes, when I yeah. feel कि जब मुझे लगता है कि आप लोग गलत sentence बोल रहे हैं, then I guide you. Aside from that, it's a conversation. It has to, because I want it to be as natural as possible. However, if there is a wrong structure of grammar or a wrong sentence structure, then of course, it's my duty to guide you then. Ji. So it was, yes, it was good. However, you got at the end, I think you got a bit off the track because I gave you a context of a bus traveling in a bus to somewhere beautiful place. Yes, so यहाँ पर थोड़ा सा आपको खैर divert कर गया, but that's okay because we are gonna have a lot of activities. So जी, you can stick to the mark there. जी. अच्छा जी, next, yes, thank you very much, Miss Aisha and Mr. Osman. As for the next activity, sorry, as for the next participant, I'm going to select Miss Madiha and Miss Shahila. हेलो सर. जी. सर मैं कन्वर्सेशन नहीं कर सकती, मैं ओके सेंटेंसेस ओके, चलें शेयर चलें कर. ठीक है.
Make sentence, but Miss Madhiya आगे जो है ना, if we have this exercise of activity of conversation, तो उसमें आपने conversation करनी होगी, सही? I am leaving you just this once. चलिए जी, Okay, sir. I try. जी Okay, sir. जी, so Pavement. इसमें से कोई सी तीन Pavement. वर्ड्स ले लें, उनके सेंटेंस बने. Sir, I try whole words. Yes. These words, you will have to use these words. Oh, okay, sir. Yeah. Pavement, footpath. The passenger walk on the pavement. Good. I'm right. Yeah. Next, Broly. Broadly. जी. I bought a brolly for rainy season. Yes. You can say I bought a Broadly for rainy season. Bought. Bought. जी. Good. And Next, one more sentence. Lou, always, Lou. Next, sir, Lou. Yes. He went to the loo. Okay, he went to the loo and never came back. Queue. Okay. I always follow the queue. Okay. चलिए ठीक है. Thank you very much. That's great. But in the next activity, I'll have you do the conversation. चलिए जी. Thank you very much, Miss Madhiya. Now going to one more person here, and then चलिए जी, बल्कि एक काम करते हैं. Let's move ahead towards the phrases because we have a lot of phrases. तो इसमें भी कुछ activity फिर जो रह गए हैं, वो बंदे जो है ना इसमें activity करेंगे. So the first phrase is fighting like cats and dogs. So even in Urdu, we sometimes to the children we say कि क्या कुत्तों बिल्लियों की तरह लड़ रहे हो, सही? But fighting like cats and dogs means के बहुत ही ज्यादा लड़ना, सही? शदीद लड़ना. So both the students were fighting like cats and dogs. दोनों तलबा शदीद लड़ रहे थे. The next one is to have a card up one's sleeve. सही? To have a card up one's sleeve का मतलब यह है कि कोई खुफिया मंसूबा होना, सही? They can defeat us for I have a card up my sleeve. वो हमें शिकस्त नहीं देख सकते क्योंकि मेरे पास एक खुफिया मंसूबा है. The third one is scaredy cat. Scaredy cat हम उस इंसान को बोलते हैं जो बहुत ही ज्यादा डरपोक हो, सही? He was like a scaredy cat upon seeing his father. अपने बाप को देखते हुए वो डर गया था, या वो अपने बाप को देखते हुए कि जैसे डर गया हो. Their fight made them all black and blue. Black and blue हम उसके लिए यूज करते हैं. We use it when someone is highly injured. बहुत ही ज्यादा जब कोई जख्मी होता है, इस तरह के जब उस पर जो है ना ब्लू कलर के या ब्लैक कलर के निशान पड़ जाते हैं, सही है, दुखने की वजह से, किसी चीज से लगने की वजह से. So their fight made them all black and blue. उनकी लड़ाई ने उन्हें जख्मों में ढांप दिया. Okay, red flag means खतरे की घंटी होना. That girl's attitude is a big red flag. उस लड़की का रवैया खतरे की घंटी है. Behind bars मतलब के सलाखों के पीछे होना या कैद में होना. The thief was behind bars for 4 years. चोर 4 साल से सलाखों के पीछे था. अच्छा, to love someone to death means कि किसी से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करना. I love my parents to death. मैं अपने वालिदैन से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता हूँ या प्यार करता हूँ. Food for thought मतलब कि फिक्र की ग़िज़ा होना, मतलब anything that actually enforces you to think. कि कोई भी चीज जो क्या करे, जो आपको सोचने पर मजबूर करती है, उस चीज को हम क्या करते हैं, फूड फॉर थॉट. फॉर एग्जाम्पल वी हैव रिडल्स. हम अक्सर इस तरह के सवाल करते हैं ना जो बहुत ही ज्यादा हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं, सही? सो फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस कैन बी फूड फॉर थॉट. फलसफियाना सवालात फिक्र की ग़िज़ा हो सकते हैं. ओके, फॉर ऑल आई केयर. फॉर ऑल आई केयर आप उस सेंस में कहते हैं जब आप किसी भी चीज की परवाह नहीं करते. आप जब कहते हैं कि मुझे परवाह नहीं है. शी कैन गो टू हेल फॉर ऑल आई केयर. वो जहन्नम में जा सकती है, मुझे कोई परवाह नहीं. एंड द लास्ट वन, टू गेट इनटू डीप वाटर मतलब कि उसमें ये परेशानी में पड़ जाना, मसले में पड़ जाना. आई एम गोना गेट इन डीप वाटर फॉर ब्रेकिंग द डोर. दरवाजा तोड़ने की वजह से मैं बहुत ही परेशानी में या बहुत ही मसले में मैं पड़ जाऊंगा, सही?
So now, okay, this time, Ms. Shahida, I'm starting with you. Kindly use 2 to 3 phrases in your own sentences. Ji, Ms. Shahida. Okay, sir, I will try. Yeah. My friends were fighting like cats and dogs. Yes, and make ये red flag जो है ना इस पर एक बना है. कौन सा सर? Red flag. ये जो लिखा है कि that girl's Okay. attitude is good red flag. जी. Our principal attitude is a big red flag. अच्छा, बट देखिए कोशिश ये करें कि सिर्फ सब्जेक्ट को चेंज ना करें कि और गर्ल की जगह आपने दी गर्ल की जगह और प्रिंसिपल लगा दिया, बल्कि थोड़ा सा क्रिएटिव जुमले बनाए. सही है. कोशिश करें इसी को दोबारा से किसी और सेंटेंस में यूज करें. जी. मैडम में नहीं आ रही. कोई दूसरा ले लें. खैर, केडी कैट ये हो गया. दिस वन इजी. चलिए, ओके, थैंक यू वेरी मच मिस शाहिदा. यस, आई एम गोइंग अलोंग विद यू वकास. जी मिस्टर वकास. Yes, sir. So you have to use these phrases in your own sentences. Kindly pick any 3 phrases and use in your own Right. sentence. Yeah. Okay, sir. When I entered the class, the students were fighting like cats and dogs. Good. And that can the culprits and police were fighting between each other, and they ended in black and blue. Good. Good. The recent budget will prove the red flag for the working class. Great. Great. Okay. And Thank you. Ji. Chaliye ji. Thank you very much, Mr. Waqas. Those were some nice sentences. Okay. And then, yes, Ms. Kamal. Yes, sir. जी, kindly कोई से 3 phrases select करें और make sentences out of them. Yes, sir. Sir, first पे जो fighting like cat and dogs. कोई दूसरा लेना. खैर ये जो है ना, it is already used too much. Okay. Yeah. Sir, जी. my जी. Behind bars हो गया. That one is easy. Behind bars कैद में होना, सलाखों के पीछे होना. Kindly hurry up. See, because we are also running short on time. Sir, आप मुझे किसी और से कुछ मैं सोच कर बताती. Okay जी, okay चलें. Miss Aisha जी. Sir, fighting like cats and dogs. Illiterate people are used to fighting like cats and dogs. And one more sentence. It was a weird scene when I saw women's were fighting like cats and dogs. And I have a card. I have a card up my sleeves, and I'm sure my kids will woke up early in the morning. And Yes, I was scared. you, I was scaredy sorry. cat when I saw the police.
Yes, sir. Yes, sorry to interrupt you. I have to say, my kids. वो आपने क्या कहा इससे पहले जुमला? What was I that? have a card up my sleeves when, and I'm sure my kids will woke up early in the morning. जी. So my kids will wake up. सही will के और shall के बाद we always use base form of verb. Will wake up. जी. The rest is My good. kids will wake up. जी. Okay. So, sir, Yeah, this carry is the on. right. It was a very weird scene when I saw women were fighting like cats and dogs. Yes. Yeah. That one was right. Okay. जी. I was like a scaredy cat when I saw the police. Good. Is it right? Yeah. It's right. And mothers can't do for all I care. Mothers can't do for all I care to the kids. क्या मतलब इसका? Kindly explain this one in Urdu. Sir, means माँ अपने बच्चों के लिए कभी भी ये नहीं कह सकती कि मुझे परवाह नहीं. Okay, you can say it like this: कि mothers simply Sir, cannot say. I'm audible. Yes, you are audible. So you can say it like this: कि mothers cannot simply say that I don't care about my kids. उस sense में आप ये या नहीं यूज कर सकते कि for all I care. सही है? ये only specific sentences में या specific तरीके से यूज होता है. जी. So you can simply say it like this: Okay, कि sir. mothers And cannot. red जी. flag. जी, carry on. Yes, sir. Say please. I'm listening. अच्छा. So you can say कि mother simply Okay. cannot say about their kids that they don't care. She don't care. Or Yes, she doesn't that care. she doesn't care. कि She doesn't उसे care. Yes. परवाह नहीं. जी बिल्कुल जी. That she doesn't care. Carry on, kindly. Red flag to increasing the dollar rate is a big red flag. Yes. Or you can say the increasing dollar rate is a For big the red poor flag. people. Yes. Increasing dollar rate. And behind bars for 4 years. Behind bars. Sir, how we can use it behind bars? You use it first, then I'll correct you. Try using it. जी. No, I didn't get. I love my kids. I love my kids to death. Or I love to learn English to death. Yeah, yes, you can say I love to learn English to death. Yes, good. And get in deep water. She get in deep water when she refused by any job or any proposal. Yes, you can say that she got into deep waters when she was refused by a job, by any job. Yeah, well, she was refused in the job. Okay, she was got in deep water when she refused by this job. Yes, she got into deep water. Yes, sir, I said that she got in deep got in deep water Yeah. when she refused by that job. When she was refused. जब उसे कर दिया गया We था. will use was and refused. Yes, third, because ये जो है ना, she was refused, ये second structure है ना, ये passive का structure है. ये भी आगे जाके हमारे I guess this is 21st or 22nd lecture. ये हमारे passive के जो structures हैं, तो ये भी हम सीखेंगे आगे जाके. So, sir, here we will not use simple past tense. You are in the first sentence, you will be using simple past. In the second sentence, you will be using the passive form of simple past. ये भी simple past है, but ये उसकी passive form है. But why, sir? If I want to use here simple past tense, so why I didn't use that? No, in the first part of the sentence you did use it. पहले part में आपने use किया ना, but second में आप कर नहीं सकती. सही? तो So, sir, repeat कर. how you can translate it if she got in deep water when she refused that proposal or that job? So how we अच्छा, will तो आप translate it? तो are you saying कि उसने खुद ही job को refuse किया या job ने उसे refuse कर दिया? नहीं, जब उस job से refuse हुई तो. Yeah. So for that one, you are going to say कि she was refused.
कि उसे कर दिया गया था। सही, अगर उसने खुद ही किया तो आप जो सेंटेंस बना रही है उसका मतलब बन रहा है कि उसने खुद ही रिफ्यूज कर दिया। Okay. या ओके Little bit got it. जी, या हाँ जी। Sir, is that So okay? I think I. yeah, that's more than enough. We have two more participants because I'm also in a bit of hurry, because 1 hour is almost done. So thank you very much, Miss Aisha. जी You're अच्छा, welcome. मिस्टर उस्मान, उसके बाद मिस्टर वकास, मैं आपकी तरफ भी आता हूँ। जी जी उस्मान साहब। Yes, sir. So I submit my article last month. So I will use two sentences. And that one is for food for thought. Yeah, My article raised several questions that were food for thought for my colleagues and the readers. great, good. And the next one is for all I care. Yes, Uh, for like then, that. then I think that people's job is to gossip for all I care. Could you say this sentence again? People's job is to gossip for all I care. उनका काम तो बातें बनाना ना सर, Okay, good. Yes, मुझे उसकी great. परवाह नहीं। जी, great. Yes, okay. Thank you, Mr. Usman. Now coming towards Mr. Waqas. उसके बाद we will proceed ahead for the main activities. जी, Mr. Waqas. सर आई थिंक आपकी कन्वर्सेशन से मेरा इशू रिजॉल्व हो गए हैं। मेरा क्वेश्चन ये था कि जिस तरह ये फ्रेज है फॉर ऑल आई केयर, जी, तो इसको हम सेकंड पर्सन के तौर पे यूज कर सकते हैं, फॉर ऑल दे केयर, फॉर ऑल यू केयर। exactly. जी, exactly. You इंस्टेड can ऑफ, use it like this. एक ये तो मेरा exactly ये आप ऐसे क्वेश्चन ही। था, ये उन्होंने बता दिया। ओके, जी सेकंड मेरा जी। क्वेश्चन ये था जिस तरह गेट इन डीप वाटर। हम्म, जी ठीक। और जो मेरा सेकंड क्वेश्चन था वो ये था गेट इन डीप वाटर, ये परेशानी में मुब्तला हो जाना। ठीक है? तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये पास्ट में गॉट हो सकता है, गॉट इन डीप वाटर, exactly. जी, या इस तरह हम exactly. किस तरह इसकी फ्रेज कर सकते हैं इन केस ऑफ फ्यूचर। She will get, let's say कि she will get in deep water for breaking the law. कि वो मुसीबत में पड़ जाएगी। ओके, जी। राइट सर। सर इन केस Yeah. मैं अकेला इन डीप वाटर यूज कर सकता हूँ, आई मीन टू रेफर टू सम सैडनेस और ट्रबल, For example, आई फेल्ट माई सेल्फ इन डीप वाटर, या गेट लगाना exactly. जरूरी है। यस, सिंपली आप डीप वाटर भी यूज कर सकते हैं। गेट मतलब कि पड़ जाना, लेकिन इन डीप वाटर सिंपली एज हिंदी अ पढ़ फ्रेज जाना। और जी, पड़ जाना मतलब कि बाद में मुसीबत में पड़ I जाना, mean, बट I mean, I was in jungle. I was feeling myself in deep water. Yeah, I was in such a यस, situation. I was feeling myself in. एग्जैक्टली यू कैन यूज इट लाइक दैट एज वेल। आप उस तरह भी यूज कर सकते हैं उसको। जी, चलें, लेट्स कैरी ऑन। Okay, we have a video here. Let me share my screen with you. ये जो वीडियो है, see के बाद is the screen. Okay. Yes, for this one, have your ears towards this video because by the end of this video, I'm going to ask you 2 to 3 questions, say, regarding this video. Just wait a bit. Okay, Mohammed Tariq, give me a minute. I'm going to unmute you in a while. Just give me a minute. जी मोहम्मद तारिक।
Do you have a question? Yes, okay. नोट्स वगैरह मिल जाए तो अच्छा है, थोड़ा सा उससे देख लिया जाए, करें रोज। जी पीडीएफ में नोट्स वगैरह मिल जाए तो उसको थोड़ा स्टडी कर लें, अगर एब्सेंट होने की सूरत में थोड़ा स्टडी Yes, कर लें। I have already shared that PDF. I did share with you yesterday. ये कल भी मैं share कर चुका था आपके साथ. So if you say so, I can share it with you. Personally, मैं जो है ना आपको send भी कर दूंगा ये क्लास के बाद. आप मुझे kindly फिर एक text कर दें. Okay, चलिए let's continue with the video. अगर आप लोग को आवाज नहीं आती kindly text me. सही? I have shared the sound. Yes, share. Hello, lovely students, and So, by the way, before she starts, I'll tell you about this video. Okay, her name is Lucy. और क्या करती है, इसका अपना YouTube channel है. She also teaches about English. So let's see, and specifically British English. So let's see what she has to say regarding her channel. hello, lovely students, and welcome back to English with Lucy. Today, I am going to tell you how to speak English fluently and how to speak it with confidence. Most of you follow me because you want to speak beautiful British English and you want to speak it confidently and fluently. You want a wide vocabulary, correct grammar, and good, clear pronunciation. Some of you even have the ultimate goal of speaking like a native. But what is stopping you from getting there? Let me tell you something. When I moved to Spain 2 years after starting proper Spanish classes, people sometimes asked me if I was a native speaker. For me, this was the ultimate compliment. But before that, I also tried to learn French and I failed. I took French lessons for 5 years at school and I hardly learnt anything. Recently, I visited a French-speaking country and I couldn't communicate at all. It was embarrassing. These two very different experiences give me an interesting perspective. I have personal experience of what it takes to become totally fluent, living my life happily in another language. I also have personal experience of what it's like to study really hard and make no significant progress. When I became fluent in Spanish, I did 3 things differently. 1, I chose a teacher I liked. I loved the way she spoke. I loved the way she explained things. Learning with her was exciting. 2, I focused on pronunciation from day 1. I learnt to pronounce words like a native before I learnt to use grammar like a native. This might sound crazy, but it works. I could pronounce the basics beautifully before I could form complex sentences. And number 3, I made Spanish my priority. I did intensive courses. I tried to think in Spanish. I tried to interact with Spanish people. I virtually immersed myself in Spanish. Drawing from these 2 contrasting experiences and my 8 years of teaching English, I have created a brand new program that will train you to reach an intermediate level of English in the same way. Let me ask you a question. Does any of this sound familiar? You can understand my lessons, but you can't understand native speakers when they talk fast. You can't understand TV shows or movies without subtitles. You feel nervous or embarrassed to respond when someone asks you a question in English. You can talk about a few common topics, but you can't enjoy deeper conversations. And finally, possibly the most important one, you feel that your level of English prevents you from showing your true personality and your true intelligence. You know what you want to say in your head, you just can't express it. Did you answer yes to any of these? Well, you're in the right place because I've created a solution for you. Let me present to you the beautiful British English
B1 program. Yes, we are focusing on B1, intermediate English for our first program. The Beautiful British English B1 program is a 12-week, 12-module program designed to take you from pre-intermediate to intermediate English. Let's take a look at my methodology and why my programs work. We have 3 core elements. Number 1, pronunciation from day 1. In my lessons, pronunciation is woven through. It is fully integrated into the course. When you learn English with me, I make pronunciation your priority. Why? It makes you feel confident and ready to speak. You break bad habits and learn good habits from the very beginning. Number 2, we build strong foundations first. You can't build a beautiful, lifelong home without strong foundations. Treat English the same way. First, you master the essentials in grammar and vocabulary with clear, visual explanations, lots of exercises, and lots of support and practice. And number 3, real British English. With your strong English foundations in place and your early pronunciation advantage, you're ready to start the fun part. I speak to you as I speak to my friends. I teach you real British English. This part of my methodology takes you from how long have you been learning English to wow, how long have you been living in England? Some students, if they really want this, can achieve the magical 3-word question, are you English? So those are the 3 core pillars of my methodology. But what's in the Beautiful British English B1 program? This is a 12-week, 12-module program. We have 3 lesson concepts in 3 different colours to boost your memory. The pink lessons are pronunciation, the blue lessons are grammar, and the yellow lessons are vocabulary. Colours might not matter to you. I think they really help. I like to know exactly where I am in a course. These are self-study lessons. You have downloadable PDF mind maps so you can revise and visualize more complex vocabulary and grammar topics. In this program, we really focus on exercises, transcription exercises, listening tests, reading comprehension, gap-fill texts, grammar quizzes, spelling tests. Put everything you've learned into practice and retain it in your memory. We also have pronunciation exercises so you can speak clearly and be understood. You have weekly speaking and writing homework with personal teacher feedback if you opt for the VIP feedback package. Everyone gets 16 weeks access to the private course community. This is where you can connect to like-minded learners and stay motivated. You can also have contact with teachers, ask questions and clarify doubts. This ensures that you never get stuck. I'm incredibly excited about this new Beautiful British English B1 program. We start on Monday, the 26th of September. I am running an introductory offer, a launch offer. You can save over $150. I'm never going to repeat this offer. You can opt for the self-study pack or the VIP feedback pack. Both options are available in a 3-month payment plan. If you would like to join the Beautiful British English B1 program, click on the button below and claim your offer. Hurry! There is a deadline. We are closing the doors at midnight on Sunday, the 25th of September. I can't wait to meet you inside the program. Bye. Okay, so this was one of the videos, and inshallah in future we will be having such videos regarding British English. Let me share the previous slide with you. Okay, so now I have 3 to 4 questions. So who would like to go first? फिर उसके बाद मैं question पूछता हूँ आप लोगों से. जी,
Great, Usman. Okay. So the first question is regarding the video. Okay, where did she go for Spanish classes? जी उस्मान friend. जी नहीं sir. could you repeat yourself again? नहीं sir, I don't remember. Okay. चलिए, another question is Yes. at what language did she fail? For what language did she? Fail to learn. वो कौन सी लैंग्वेज सीखना चाहती थी but she actually couldn't? Spanish सीखना चाहती थी. But she actually failed. उसमें जो है ना वो fail हो गई. Okay, one last question. It's okay. Yes, this one's a bit tough. Okay, what 3 steps did she take for learning Spanish? तो स्पेनिश पे पढ़ने के लिए ज़्यादा आगे से क्वेश्चन कर सकते हैं कुछ ड्रामा टीचिंग प्रोग्राम. जी. I have all actually I have only these 3 questions right now, so that is why. Okay, बाकी जो था the rest was just her introduction to her own topic. That is why I didn't feel it necessary कि वहाँ से मैं question उठाऊँ. सही? जी. तो चलें, it's okay. Thank you very much. हमारी इसी तरह वीडियोस आती रहेंगी तो उसमें जो है ना yes because the reason for this activity is कि आप जो है ना कितनी आपकी listening activity कितनी strong है, how strong you can listen. Yes. Thank you very much, Usman. Okay, yes, going towards now Mr. Waqas. जी. Yes, sir. Yes, so Sir, actually, I listened all of her conversation, but I wasn't expecting that you would ask the questions about the circumstances going through with her. So I only focused on the accent. I think I was understanding whatever she was saying. Good. So yes, actually this activity goes like this. I actually ask questions related to the video. Okay, sir. For the next time, inshallah, we'll focus Okay. on the circumstances going through deeply. It's okay. It's okay. Thank you very much. Yes, okay, Miss Aisha, I'm muting you right now. Yes, I'll repeat the question again. So Yes, sir, because I have the signal issue, so I didn't see proper video, but okay. So I just saw even the middle section. okay, but the questions are actually from the beginning part of the video. However, let me ask you, where did she go for Spanish classes? Sir, I didn't see that. Can I explain what I saw and listen? Yeah, why not? Why not? Sir, I just listened that she has giving the online classes and she is giving discount of $150 right now. Yeah. And she was saying, I will not give you more discount after that time. And she was explaining her way of teaching. In this method, she was saying that she will work on, first of all, she will work on pronunciation. And Yeah. after that, she will build strong foundation. And Exactly. then she was saying, and I will teach you real British English. And she was saying, if you need personal feedback, so she was giving us the study pack, and she was saying you can gain personal feedback of the teachers. And she was saying, if you want to learn English, so you should find a teacher that you like too much. Exactly. So yes, that was the general gist of the whole video. Thank you very much, Miss Aisha. Yes, Miss Madiha, coming towards you. Yes, sir. So, Miss Madiha, could you tell me what the whole video was about? Yes, Madiha. Yes, sir. क्या आप बता सकती हैं कि जो पूरी वीडियो थी किस चीज के बारे में थी?
सर इंग्लिश सीखने के बारे में बता रहे थे Yeah, कि but could you tell me in detail? ये सर अब थोड़ा तफसील में आप बता सकती हैं? नहीं सर Okay, okay. No, it's okay. One more person and then we'll move ahead. जी Miss Aisha. And sir, she was telling about something in colors, green, pink, and blue. I think blue color was in grammar, and I Yes, just exactly. listened her. Yeah, yes, she actually has divided her lessons according to the background color as well. So blue color was for Yeah, yes, yellow was and for she was vocabulary. Yeah. and she was telling us, yeah, Mm. Yeah, and she, yeah. and she was telling us that everyone will ask you where how you have been learning English, how long time you have been. Exactly, exactly. She was telling us that after the course, people will be judging you on the basis, and those might be their comments. Okay, from where have you been learning English? How have you been learning? And do you belong to England? And are you English? It means, are you a native speaker of English? So after she was actually telling us the results of her language And one teaching more thing, skills. she Yeah. was describing that if we watch videos, so we can enjoy, but we can't enjoy the deep meaning of the video because we are not understand what they are saying. They are using phrases, idioms, and some different. We just can watch and understand, but we didn't enjoy the fully videos. Exactly. She was actually telling us that people face some certain errors when they simply know basics of English language. Yes. Okay, now proceeding ahead. Thank you very much, Ms. And Aisha. one Yeah. more thing she was describing. Yes, let's carry on. She was saying that we can understand from the songs, and she was saying that you can understand me, you can understand from videos, but you can't understand from the natives because they speak fluently and fastly, so you can't understand what they are saying, and then you Exactly. get embarrassed when someone is asking from you and you can't understand them. Exactly, exactly. Yes. So I'll also give the answers to the questions. So my first question was, where did she go to learn Spanish classes? She went to Spain in order to learn Spanish language. And the language at which she failed was French language. She went to France to learn English, but unluckily, she couldn't learn French language. And my third question was, what 3 steps she took for learning Spanish? Actually, she got a likable teacher. उसने एक ऐसा teacher select किया जो उसे पसंद था या पसंद थी. सही है? Another second step was pronunciation. From day first, she focused on pronunciation. कि Spanish सीखने के लिए जो pronunciation होती है उसी पर उसने पहले दिन से ही focus किया. और तीसरे थर्ड पॉइंट क्या था कि शी प्रायोरिटाइज्ड स्पेनिश के स्पेनिश को अपनी प्रायोरिटी बनाई स्पेनिश को इम्पोर्टेंट समझा और जो पॉइंट मैं अक्सर आप लोगों को बताता रहता हूँ कि यू हैव टू थिंक इन इंग्लिश शी आल्सो टोल्ड कि शी एक्चुअली स्टार्टेड थिंकिंग इन स्पेनिश इन ऑर्डर टू लर्न स्पेनिश तो इसीलिए उसने स्पेनिश में फिर काफी हद तक नेटिविटी भी हासिल कर ली ओके जी नाउ लेट्स कैरी ऑन ओके सो आई एम स्किपिंग दिस एक्टिविटी बिकॉज ये जो है ना हमारी पिछली ही एक्टिविटी जो पिछला लेक्चर था देयर इसके हवाले से देयर आर के हवाले से तो उससे रिलेटेड है एंड आल्सो वी आर गॉटन लॉट ऑफ शॉर्ट ऑन टाइम सो दैट्स व्हाई आई एम स्किपिंग दिस एक्टिविटी ओके नाउ कमिंग टुवर्ड्स देयर वाज एंड देयर वर तो क्या है कि ये भी सेम ही स्ट्रक्चर है बट देयर वाज और वर क्या है दे आर रिलेटेड टू द पास्ट जब हम माजी के हवाले से बता रहे होते हैं तो हम यूज करते हैं स्ट्रक्चर वाज का और वर का So was हम कब यूज करते हैं when we are talking about singular noun सही है there was a girl सही है कि एक लड़की थी there was a girl under the tree last evening कि पिछली शाम दरख्त के नीचे एक लड़की खड़ी थी and there were कब हम यूज करते हैं when we are talking about plural for example there were some bodies floating on river 2 weeks ago कि 2 हफ्ते पहले कोई डेड बॉडीज थी जो कि दरिया के ऊपर तैर रही थी सही So we use was for singular nouns and were for plural nouns. सही. So here is an activity. यहाँ पर क्या है कि sorry. Okay.
चलिए मैं आप लोग को नेगेटिव का स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा बता देता हूँ, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी डन द प्रीवियस इन द प्रीवियस क्लास यू हैव डन द स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव, तो ये भी दैट इज क्वाइट मच द सेम। तो उसके बाद फिर इस एक्टिविटी की तरफ आएंगे। So when showing the negative, this one is simpler. You simply have to put not after the helping verb या auxiliary verb was or were, कि मतलब कि was और were के बाद आपने not लगाना होता है। The rest of the structure remains the same. For example, there was a girl under a tree. There was not a girl under a tree. There were some bodies floating on the river. There were not some bodies floating under the river. Yeah, there wasn't a girl. There weren't some bodies. इस तरह सही है। there wasn't a rail, there was not, there wasn't भी आप कह सकते हैं, और there were not जो है ना उसको there weren't भी आप कह सकते हैं। So there wasn't a railway station in my village 5 years ago. If you were to say it in positive, वो इस तरह होता कि there was a railway station in my village 5 years ago. सही? So now changing it into negative, there wasn't a railway station in my village 5 years ago. सही? So I hope you got the structure of it. तो अच्छा इस एक्टिविटी में क्या करना है, you have to tell it कि how your village used to be and how it is now. So इसमें in this activity you can see कि we have combined both the lecture of today and the lecture of the previous day from the day before, कि उसमें इसमें अब there was और were का structure भी use हो रहा है, and we are also using the structure of there is and there are. सही? तो आपने क्या करना है, बताना है कि अभी आपका जो शहर है, सॉरी अभी आपका गांव, बल्कि इस तरह बताना है कि पहले आपका गांव किस तरह हुआ करता था, कौन कौन सी सहूलियात मौजूद थी, एंड नाउ हाउ इट हैज चेंज्ड ओवर टाइम। चेंज के बारे में हमने पढ़ा है ना, अभी आप लोगों ने मुझे अपने व्यूज दिए ना चेंज के बारे में। सो यू हैव टू टेल हियर कि हाउ योर विलेज हैज टर्न्ड इनटू अ सिटी, और किस तरह आपका गांव जो है ना वो शहर में चेंज हो गया, तब्दील हो गया, और कौन कौन सी चेंजेस आ गई हैं। सही? So and kindly tell it to in 3 to 4 sentences. 3 से ज्यादा, 3-4 से ज्यादा जुमलों में ना बताएं, बस 3 to 4 से तक लिमिटेड हो आपके जुमले जी। And I'm starting this one activity with Miss Shahida. जी Miss Shahida. Miss Shahida, are you with us? अच्छा जी, Mr. Usman. Yes, sir. I hope you got the activity. Yes, sir. Yeah. Sir, there were off-roads in my village, but now there are metal roads in my village. Good. So there was an old house in my in the last street of my village, but now there is a bank building on the same place. Good. Yes, one more sentence, Usman. Yeah. The people were there were people watch telly after Maghrib, but now there are people engaged in their family matters. Yes, in the first sentence you can say there were people who watched telly after Maghrib. Watched telly. Ji, yeah. So thank you very Thanks. much. Yes, sir. My pleasure. Okay, now going towards Ms. Aisha. Sir, actually, I belong to Faisalabad, and our hometown was Jadawala. So I will describe some That's great. picture of Yeah. Jadawala. So there were small mud houses, and there were no bathroom in the house, and there were a hand water pump, and people were used to keep the water in the mud pots, and
there were only horse with carts for travel anywhere. Sir, Tanga ko horse with cart bolenge? I don't have some specific word in mind right now, but yes, for now, we can use that. Yes, मैं check कर लेता हूँ Horse पहले. with carts. And there were a lake, and we enjoyed there, and we were boating over there. And now our hometown is quite improved. All the people there were strong and high-rise buildings over there, and there were lot of brands like Stylo and Beechtree. And Yes. on the street, there was the ice cream Creamy Bites launched over there, and there is also a shopping mall. That was the Yes. ice cream Okay. works, and Yes, there was Miss Aisha, lot sorry of to interrupt schools you. just like LGS and branded schools over there. Okay, okay. Yes, sir, Miss Aisha, for horse cart, you use the word carriage. अभी मुझे याद आई है, and I just checked it out. Carriage, okay? For horse-driven car, जो buggy होती है ना, उसको हम carriage कहते हैं. जी. Carriage. Yes. Okay, sir. Okay, thank you very much. Yes, Askawal, you have been quiet for a long time now. जी. जी सर. Okay, yes, Mustafa, kindly, I want you to talk over it a bit. कि आपने बताने कि पहले आपका गांव किस तरह हुआ करता था and how it is now. कि अब किस तरह हो गया है. जी. जी actually sir, I live in district Umarkot, but my city name is Kunri Sindh. Okay. There was a big red chili market in whole Asia. ठीक सर. Okay. Yes, yes. But And sir, ठीक है. There is a big red chili market in whole Asia till now. okay, there आप ये बता रहे हैं कि पहले हुआ करता था. थी और अभी भी है till now. Okay, okay. Still, you can say that, and even now there is the same shop over here. Yeah. Sir, there were a big road in our city, our Yes. town. Sorry. Yes, you Our can say town. there was a big road. जी. There are a big road in our town. Same. There are अच्छा There लेकिन were. well sorry to interrupt, जब आप was लगाते हैं तो उसके साथ singular road लगाएंगे. जब were Singular लगाते road. हैं तो roads. जी. There was a road, there were roads. जी. ठीक है. Sorry Yeah. sir. No, it's okay. It's okay. There were not an English school in 19th, but there are many English school in our city. Yes, there are many English schools. Good. Yeah, there were no private hospital in our city, but Okay. there are many hospital in our city, but not specialist, only maternity Maternity hospital. patient Okay, okay. for patients. Okay, okay, great. Chale, thank you very much. Yes, Mustafa, thank you very Thank much. Yeah. Okay, I will now move ahead with Miss Madiha. Yes, sir. Yes, so kindly do the same activity. Okay, sir. Sir, I currently live in Islamabad, but I belong in Narwal, from Narwal. Yes. Okay, so kindly Sir, try describing it. Yeah. there you can was say- Yes, there was a mud houses, yes. and now they were a strong building, strong and heavy buildings, houses. So now there are buildings, yes. There was no many shops or anything. You can say there were not any shops.
There were There were not any shops. Not. there were not any shops. Mhm. Mm, Yes. But now there were many shops for everything, like Yes. clothes, Mhm. shoes, groceries, etc. Good. One more sentence. There were not roads, mud roads, कच्ची सड़कें थी sir. Yes, good. Now strong roads. Good. Could you repeat the last sentence again? Sir, I ask. Now there were strong road. Okay, now there are strong and tough roads. Yes. Yes, sir. Good. Okay, Chani, thank you very much. Let's continue with the activity. Okay, negative के बारे में we now coming towards the question. सही? Okay. Yes, Mr. Tariq. जी. कुछ किसी चीज में देख के पढ़ना ये बता रहे हैं ऐसे होता क्या है? ये इंग्लिश ये बोलना सिखा रहे हैं इधर बता दो कुछ इंग्लिश Okay. Okay, Chani, let's continue. So when it comes to question के structure से आप question किस तरह बनाते हैं? बाकी sentence आपका same ही रहता है. All you have to do is just put either was or were in the beginning. कि शुरू में आपने was लगाना होता है अगर आप singular noun की बात करते हैं, singular subject की. तो there was a railway station in my village. इसको इस तरह करते हैं कि was there a railway station in my village 5 years ago. सही है कि मेरे गांव में 5 साल पहले एक रेलवे स्टेशन था. क्या मेरे गांव में 5 साल पहले एक रेलवे स्टेशन था? तो इसी तरह was की बजाय फिर if you are talking about plural तो उसमें फिर आप were कर दें. सही है plural की केस में. There were skyscraper buildings 100 years ago. कि 100 साल पहले skyscraper buildings थी मतलब कि बहुत ही ऊंची इमारतें थी. Were there skyscraper buildings 100 years ago? क्या 100 साल पहले ऊंची इमारतें थी? सही. So was there a national school in our area in 2009? Were there luxurious cars in 2000? इस तरह. सही. Okay. सही है. तो काइंडली आई वांट यू टू गिव मी वन एग्जांपल ईच के आप जो है ना मैं कुछ बंदों को सेलेक्ट करता हूँ और वो बंदे क्या करें कि एक ही सेंटेंस कोई सा भी पिक कर लें. सही है. खुद से कोई सेंटेंस बना लें एंड देन यू विल हैव टू पॉजिटिव में होना चाहिए सेंटेंस. देन यू विल हैव टू चेंज द पॉजिटिव इनटू क्वेश्चन सेंटेंस. सही. यस स्टार्टिंग विद जी इसका वाला. ओके वकास जी काइंडली टेक द स्टार्ट. Okay, sir. There was a railway station in my village 5 years ago. Was there any railway station in your village 5 years ago? यस बट कोशिश करें Like कि this, sir? खुद से जुमला खुद से बनाए. बाकी ठीक है बिल्कुल सही कहा है स्ट्रक्चर सही है बट यू हैव टू मेक योर ओन सेंटेंस. जी. Yes. Okay, sir. Sir, I think 20 years before there was no concept of tuition centers, and today it has become the part and parcel of today's life. So, was there any tuition center 30 years before? Good, good. Chalo, great. Thank you very much. Yes, okay. Now, Mr. Usman. So there was a rose petal box placed on my table. Was there a tissue paper box on my table? Okay, good. Thank you very much. Yes. Okay, Miss Mohammed Tariq.
ओके मोहम्मद तारिक जी। अगर वो उस पिछले सेंटेंस के बारे में बात करना चाह रहा था, जिसे जी जी देयर वर नो thieves in our city, but there are many thieves in our city. ओके ओके सही। एंड काइंडली इसका भी अभी बना रहे हैं क्वेश्चन, जो सेंटेंस है ना, काइंडली मेक अ क्वेश्चन आउट ऑफ इट। जी, कि आपने क्या करना है कि पॉजिटिव सेंटेंस है उसका जो है इंट्रोगेटिव बनाना है, क्वेश्चन बनाना है मोहम्मद तारिक। क्वेश्चन मार्क किसी जी भी आप किसी भी सेंटेंस का क्वेश्चन एग्जैक्टली अब देखें जिस इंटरोगेटिव। तरह के, जी इंट्रोगेटिव बनाना है आपने। तो जिस तरह के यहाँ पर ये माय विलेज नाउ में नीचे देखिए पहला सेंटेंस कि देयर आर मेनी स्टोरी बिल्डिंग्स इन माय विलेज नाउ। सो इफ अगर मैं इसका क्वेश्चन सेंटेंस बनाऊंगा, सो इट विल बी लाइक दिस कि आर देयर Are मेनी there स्टोरी बिल्डिंग्स इन माय are विलेज there नाउ। जी are there many stories? एग्जैक्टली। सो खुद से एक सेंटेंस बनाया और उसका पॉजिटिव सेंटेंस होना चाहिए, एंड देन यू हैव टू चेंज इट इनटू नेगेटिव। अच्छा ठीक है। जी बयानिया इंटरोगेटिव और नेगेटिव तीनों बनाना है। सिर्फ दो बनाने हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव एंड इंट्रोगेटिव। कोई भी सेंटेंस। जी ये there are many educational institute in our city. Are there many schools in their city? You can say कि are there many educational institutions in our city? जी सही। जी जी सही। Okay, thank you very much. Now one more person here, Miss Madiha. Yes, sir. जी kindly make a sentence here. Positive को negative में sorry interrogative में change कर दें। जी Sir, sir, there are many schools in my village. yes Was there, sir, was लगाना है? there were many schools। हमने past के बारे में बात करनी है ना अभी। जी Okay, sir. There were many schools in my village. जी Was there was नहीं was there वर लगाएंगे ना, क्योंकि was- देखें देयर वर मेनी स्कूल्स, जब यहाँ पर भी आप ज्यादा स्कूलों की बात कर रही हैं तो आपने वर लगाया था। सो जब आप क्वेश्चन में बात करेंगे इंट्रोगेटिव में, तो तब भी वहां वर ही लगेगा। सही जी। काइंडली मेक द Okay, sir. सेंटेंस, कंप्लीट द सेंटेंस। जी Was there many schools in my village? वाज नहीं, वर देयर मेनी स्कूल्स इन माय विलेज। Were in my village. जी वर क्यों लगेगा? Yes. जी sir. वर हम क्यों लगा रहे हैं यहाँ पर कि वर देयर मेनी स्कूल्स इन माय विलेज? सर ज्यादा स्कूल्स की बात हो रही है। एग्जैक्टली, बिकॉज प्लूरल ज्यादा स्कूल्स की बात हो रही है ना, इसलिए। चलें लेट्स कंटिन्यू टू द नेक्स्ट एक्टिविटी। I will be increasing my pace here as well. अच्छा नाउ इन दिस एक्टिविटी हमने क्या करना है कि 50 years ago हमने ये बताना है कि पहले क्या हुआ करता था और क्या नहीं हुआ करता था। सही। सो वी आर कंबाइनिंग हियर द स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रेजेंट सॉरी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। फॉर एग्जांपल फर्स्ट सेंटेंस में आप लोगों को बता देता हूँ कि 50 years ago there was telephone sorry 50 years ago there was mobile phone but there wasn't telephone, या 50 years ago there was telephone but there wasn't a mobile phone या एंड्रॉयड फोन। इस तरह से कि 50 साल पहले टेलीफोन हुआ करता था पर मोबाइल फोन नहीं हुआ करते थे। सो इस तरह यू विल हैव टू फिल ऑल द सेंटेंसेस एंड काइंडली एक बंदा एक ही सेंटेंस करे। जी स्टार्टिंग विद यू मिस आयशा, पिक एनी वन सेंटेंस। जी मिस आयशा। Yes, sir. In 2000, there were phones, but there were not video calls. Yes, exactly. There are phones, but there were no video calls. There weren't video calls. Good. Thank you.
हाँ जी, मोहम्मद तारिक जी। 50 years ago, black and white TV, they were, but not colored TV, not present. जी, Nowadays, color TV are color TV. There was 50 years ago, you can say, 50 years ago there was a color TV. जी, carry on. जी मोहम्मद तारिक, carry on. similarly, uh, bikes 50 years ago, not famous cars, but also bicycle are present. Could you repeat this again? मतलब 50 साल पहले साइकिल में तो बहुत थी, मोटरसाइकिल में कारें कम थी. Okay, so यहाँ आप ये कह सकते हैं कि 50 years ago there was bicycle, या there were bicycles, but there weren't many cars. सही कि साइकिलें बहुत थी लेकिन गाड़ियां कम थी, गाड़ियां या कम थी. गाड़ियां नहीं थी. जी, there नहीं weren't थी. many. जी, there weren't cars अगर आप कहेंगे तो मानो कि गाड़ियां नहीं थी. there weren't many cars के ज्यादा गाड़ियां नहीं थी. There were जी, many cars. ठीक. there were not many cars. Good. Okay, thank you. जी, Miss Kawal, are you with us? Okay, मुस्तफा, जी सर. कोई सा एक सेंटेंस बना लें इसमें फिल कर लें. जी एक बस. जी जी, कोई सा एक. जी सर. सर ये 50 years ago, इससे कोई भी, या कोई भी, इट्स अप टू यू. जी 50 years ago there was, but there wasn't. सर ये एक जरा आप बताइए, फिर मैं वापस बना लेता हूँ. 50 एक जरा years मैं, ago. क्योंकि मैं थोड़ा काम. जी कि 50 साल यस. पहले क्या चीज हुआ करती थी और क्या चीज नहीं हुआ करती थी, इस तरह आपने बताना है. होती थी जी 50 years ago. जी There was a black जी, and white TV, एग्जैक्टली. but एंड there wasn't a black and white TV. नहीं, कोई देखिए मुख्तलिफ चीजें बतानी है. अब एक चीज आप तो ये कह रहे हैं कि जी कि 50 साल पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हुआ करता था लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट टीवी नहीं हुआ करता था. सही, तो इस तरह तो नहीं कह सकते ना जी. हम. एक चीज होगी, दूसरी चीज जो नहीं होगी उसका फिर बाद में जिक्र करना है आपने. अच्छा. जी But 50 years ago there was, 50 years. सर एकदम जहन में नहीं आया, पता नहीं क्यों. 50 years ago there was जी, East Pakistan. there was. East Pakistan. Yes. 50 years ago there was a East Pakistan, but there wasn't. There wasn't, you can say there wasn't Bangladesh. ये बांग्लादेश नहीं था, ईस्ट पाकिस्तान था. जी East Pakistan. ठीक सर. एक और. yes. और जी In 2000 there were there weren't. In 2000 there yes. were sir ये not. There were not. There were कि क्या चीजें होती थी और क्या चीजें नहीं होती थी. In 2000 there were many video centers. Yes. ठीक है. But there weren't. सर इसको हम किस तरह पढ़ेंगे weren't को? were not को मिला के. weren't पढ़ेंगे, weren't. जो सही But there पढ़ना है. weren't. जी या But there there weren't. weren't. अब नहीं है वीडियो सेंटर. वीडियो देखें, इसमें ये हम जिक्र नहीं करेंगे पहले क्या होता था और अब क्या होता है. इसमें हम माजी का ही जिक्र कर रहे हैं कि पहले क्या चीजें होती थी और क्या चीजें पहले नहीं हुआ करती थी. सही. जी जी सर. 2000 में थी और अब नहीं है, ऐसे. ऐसे नहीं कि 2000 में कौन सी चीजें थी और 2000 में कौन सी चीजें नहीं थी. अच्छा, कब का ही बताना है. जी जी. सॉरी सर, मैं समझ नहीं सका था. नो इट्स ओके, इट्स ओके. जी
In my childhood, बस in my ये जी childhood, जी in my child, there was an orphan child, but there is अभी भी हूँ. You can say कि in my childhood there was park but there wasn't horror house कि पार्क होता था लेकिन हॉरर हाउस नहीं होता था सही चलें थैंक यू वेरी मच मिस मुस्तफ़ा अच्छा ये जी उस्मान हबीब एंड मिस आयशा आप लोग को मैंने जरा नेक्स्ट एक्टिविटी में जो है ना आई विल गिव यू टाइम सही ओके सही बिकॉज वी हैव स्टिल ये वेयर विल बी का स्ट्रक्चर रहता है हमारा अभी कार्डिनल ऑर्डिनल नंबर्स रहते हैं एंड टंग ट्विस्टर्स वी आर लेफ्ट विद 3 मेन टॉपिक्स अच्छा सो विल बी का स्ट्रक्चर क्या है कि सिंपल द रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर इज द सेम जिस तरह देयर वर हमने पढ़ा है ना तो वो स्ट्रक्चर भी वैसा ही है देयर विल बी अ न्यू प्रोजेक्ट नेक्स्ट संडे सिर्फ क्या है कि हमने जो है ना यहाँ विल बी लगाना है सही वर की जगह ओके यस मिस आयशा कैन अप्लाई दोस आइडियाज इन दीज सेंटेंसेस है जब मैं आप लोगों से पूछूंगा इसमें सो नेगेटिव क्या है कि सॉरी द पॉजिटिव इज कि देयर विल बी और फिर द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस देयर विल बी अ न्यू प्रोजेक्ट नेक्स्ट संडे के आने वाले संडे में एक नया प्रोजेक्ट होगा या किया जाएगा या इफ यू वर टू चेंज इट इनटू नेगेटिव तो नेगेटिव में कैसे चेंज करेंगे कि देयर विल नॉट बी अ न्यू प्रोजेक्ट नेक्स्ट संडे कि अगले संडे कोई नया प्रोजेक्ट नहीं होगा सही विल नॉट बी या वॉन्ट बी सिंपली विल नॉट या वॉन्ट आप कह सकते हैं सही so there will be a cricket match on 26th October there won't be a cricket match on 26th October so there won't be ethnic war in the future there will be ethnic wars in the future सही तो इस तरह करके क्या करना है आपने कि फ्यूचर में एथनिक के नस्ली जंगें हुआ करेंगी देयर विल बी एथनिक वॉर्स इन द फ्यूचर देयर वोंट बी एथनिक वॉर्स इन द फ्यूचर के फ्यूचर में मुस्तकबिल में ये नस्ली जंगें नहीं हुआ करेंगी ओके एज फॉर द क्वेश्चन चलें पहले थोड़ा सा इसकी एक्टिविटी पे वो कर लेते हैं Okay, you can say Muhammad Arif, 59 years ago, girls were simple, but but the girls, but there are no simple girls. आप इस तरह कह सकते हैं, ठीक है? There are no simple girls today. जी. Okay, so yes, sir, starting with you, Miss Aisha. Kindly इसमें जो दो sentences not much because we don't have enough time. So कोशिश सब करें कि दो से ज्यादा sentences ना बनाएं, ठीक? Because हमारे पास इतना भी वक्त नहीं बचा क्लास के लिए. जी, Miss Aisha. Sir, in my opinion, there will be school in the future, but there will be no buildings in the future. I think there will be homeschoolings in Okay, near good. future. Okay, good. So अच्छा and kindly make one more sentence कि जिसमें जो है ना ये पॉजिटिव का हो फ्यूचर के बारे में उसको आपने नेगेटिव में चेंज करना है Mm, there जी will be no human friends in 50 years, and there will no, sir, I didn't get right now. नो अच्छा देयर विल बी नो जो है ना वो अलग स्ट्रक्चर है और देयर वॉन्ट बी या देयर विल नॉट बी वो एक अलग चीज है सही है सो कोशिश करें कि देयर विल नॉट बी या देयर वॉन्ट बी को यूज करें आप सर मैं ये बनाना चाह रही थी कि जी मतलब फ्यूचर में जो है इंसान दोस्त नहीं होंगे, टेक्नोलॉजी आपकी दोस्त होगी. Okay, there won't be any human friends. Instead, technology will be your friends. तो आप इस तरह कह सकती हैं कि technology Okay. will be your friend. जी, सही. Yes, okay. जी, Mr. Osman, you wanted to participate in the previous one? No, sure. जी. There will be, so in the future, there will be more focus on our next lectures. The future, there will be more focus on new topics. there will be no focus on new topics. Good.
एंड इसको पॉजिटिव में किस तरह चेंज करेंगे आप? Will there be, है ना, सॉरी, पॉजिटिव में सर। जी, यस, बिकॉज अभी हम क्वेश्चन इंट्रोगेटिव की तरफ नहीं आए, तो आपने नेगेटिव का जुमला बताया ना, तो यू हैव टू चेंज इट इनटू पॉजिटिव। सर मैंने पॉजिटिव ही बनाया, there will be, कुड यू रिपीट द सेंटेंस? सर इन द फ्यूचर देयर विल बी, there will be, we have to make, there will be more focus on our lectures. अच्छा मोर, अच्छा आपने मोर का, आई थॉट यू सेड कि देयर विल बी नो फोकस, दैट्स व्हाई आई गॉट इट No रॉन्ग। focus. जी, सही है, सही, देयर विल बी मोर फोकस, सो काइंडली चेंज इट इनटू नेगेटिव। There won't be more focus in our future lectures. Good. So yes, there won't be any focus on a future lecture. You can say it like that. जी. Unfortunately, there won't be no more time to complete this lecture. अच्छा, ये आपने normal को use किया ना, so you can say it like this कि there will be no more time. सही? अब क्योंकि हम double negatives कभी use नहीं कर सकते कि आप will not भी करें और उसके साथ आप no भी use करें। सही, तो आपने या no use करना है या will not, won't use करना है। सही? जी। Okay. Yes, Mr. Waqas. जी, Mr. Waqas. Sir, in the future, there will be more vehicles, but they Yes. won't have the drivers in it. Okay, there will be vehicles, but there won't be any drivers. चलिए, ये भी अच्छा है कि आपने दोनों स्ट्रक्चर को एक साथ यूज कर लिया। Second must be there will be more transfer channels, the Yeah. payment channels, but there will not be banks anymore in the future. There will not be Banks anymore. okay, thanks anymore. Good. चलिए जी, let's continue with the question कि इसका question किस तरह बनता है। So it is quite much the same, but थोड़ा सा अच्छा इसमें complication क्या है कि when you're making question, you always start with will helping verb के साथ, फिर उसके बाद there लगाते हैं बीच में, सही है, subject, और उसके बाद be लगाते हैं and then the rest of the sentence. For example, okay, there will be a new project next Sunday. So इसको किस तरह करेंगे कि will there be a new project next Sunday? will पहले आ जाएगा, फिर there, फिर be, और फिर बाकी सेंटेंस वही रहेगा आपका। सही? So yes, I want you to give me one example each. जी मिस मदीहा, यहाँ से भी जरा आप एक एग्जांपल दे दें कि किस तरह हम जो है ना पॉजिटिव स्ट्रक्चर को क्वेश्चन में या इंट्रोगेटिव में किस तरह चेंज कर सकते हैं। जी मिस मदीहा। यस सर। जी, सॉरी सर, मुझे पूरी समझ ही नहीं आई। क्या समझ नहीं है आपको? सर मुझे लास्ट में जो आपने समझाया है, मतलब नेगेटिव करना है और इन अच्छा, नेगेटिव फ्यूचर की समझ नहीं आई। वो ये हाँ ये सर मुझे अच्छा, आपको इन मतलब जो फ्यूचर क्वेश्चन की समझ नहीं आई। अच्छा, चलिए मैं आपको समझा देता हूँ। एंड बाय द वे, पहले से आप लोग को मैं एक चीज बता दूं, दो वी हैव अ लॉट ऑफ स्लाइड्स लेफ्ट, इन केस अगर हमारी कोई स्लाइड रह भी जाती है तो हमारी जो नेक्स्ट क्लास दैट इज गोइंग टू बी मोर लाइकली आफ्टर ईद, ईद के बाद जो क्लास होगी तो हम इंशाल्लाह इधर ही से कंटिन्यू करेंगे, सही, इसी स्लाइड से। सो नो थिंग्स टू वरी अबाउट। अगर मैं पीछे जाकर, क्योंकि मेरा मकसद क्या है कि हर एक स्टूडेंट जो है ना वो समझ जाए, मैं ये नहीं चाहता कि बस आगे भागते जाओ और समझ कुछ ना आए पीछे फिर। ओके, सो मिस मदीहा, ये सॉरी, हियर इट इज। अच्छा, विल बी का जो स्ट्रक्चर है ना, वो हम क्या करते हैं उर्दू में, हम क्या कहते हैं कि फ्यूचर में, आगे जाके मुस्तकबिल में बड़ी अच्छा हवा में उड़ने वाली गाड़ियां होंगी, तो जो होंगी का स्ट्रक्चर है इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, फॉर दिस हम विल बी का स्ट्रक्चर यूज करते हैं। क्योंकि जहां पर भी, अच्छा जहां पर भी इंग्लिश में आप विल या शैल देखेंगी ना, तो वहां पर क्या होता है, असल में हम मुस्तकबिल की बात कर रहे होते हैं, फ्यूचर की। सो अब तक हमने क्या किया था, देयर आर का स्ट्रक्चर के देयर इज अ बॉटल, कि यहाँ पर एक बॉटल है,
सही, मतलब कि प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। फिर हम आए पास्ट की तरफ कि देयर वर बॉटल्स, कि हमारे देयर वर बॉटल्स ऑन द टेबल, देयर आर बॉटल्स ऑन द टेबल, के मेज पर बोतलें पड़ी हुई हैं। सही है, वो हमारा परसों का लेक्चर था। देन वी वेंट बैक इनटू द पास्ट, फिर हमने पास्ट की बात की कि देयर वर बॉटल्स ऑन द टेबल, के मेज पर बोतलें पड़ी हुई थी। सही, और फिर उसके बाद क्या है, अभी हम फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं। सही, कि देयर विल बी बॉटल्स ऑन द टेबल, के मेज पर बोतलें पड़ी हुई होंगी। सही, तो फ्यूचर का स्ट्रक्चर क्या है, फ्यूचर के स्ट्रक्चर के लिए हम हमेशा देयर, सही है, देयर के बाद विल आ जाता है और बी आ जाता है। तो विल बी जो है ना, ये हम बताते हैं कि ये काम होगा या ये काम किया जाएगा या ये चीज इस तरीके से होगी, तो उसके लिए हम विल बी का स्ट्रक्चर यूज करते हैं। सही, और उसके बाद जो है ना, जिस तरह आप प्रेजेंट में और पास्ट में सेंटेंस बनाती थी ना, तो फ्यूचर में भी इसी तरह बनाए। सिर्फ ये क्या है कि यहाँ पर जो नेक्स्ट संडे लिखा है कि आने वाला संडे, दिस इवनिंग, ये जो आने वाली शाम है, इन द फ्यूचर, मुस्तकबिल में, तो आप सिर्फ और सिर्फ जो है ना ये चीज यूज कर ये चीज आपने ये फ्रेजेस यूज करने होते हैं फ्यूचर के बारे में बताने के लिए। सही, सो फॉर एग्जाम्पल देयर आर, अच्छा, देयर आर 4 बॉयज इन द क्लास, क्लास में 4 लड़के हैं, ये हो गया प्रेजेंट। अगर मैं पास्ट को का जिक्र करूं, देयर वर 4 बॉयज इन द क्लास, सही, कि क्लास में 4 लड़के थे। लेकिन अगर मैं फ्यूचर का इस्तेमाल करूं, देयर विल बी 4 बॉयज इन द क्लास, के क्लास में 4 लड़के होंगे। सही, तो इस तरह जो है ना हमने विल बी का स्ट्रक्चर बनाया। तो अभी आपको मैं एक, सॉरी, अच्छा एक मिनट, अच्छा मैं आपको यहाँ पर जो है ना एक, ये कुछ सेंटेंसेस हैं। अच्छा, इसमें इनमें कोशिश करें कोई सा एक सेंटेंस पिक करें मिस मदीहा, और उसको जो है ना आप फ्यूचर में चेंज करें। जी, There are 3 schools. ओके, देयर आर 3 स्कूल्स, तो इसको फ्यूचर में आप चेंज करें। There will be 3 schools. गुड, देयर विल बी 3 स्कूल्स, तो एक और जुमला लें और उसको फ्यूचर में चेंज करें। There is an indoor stadium in my village. गुड, तो इसको There will फ्यूचर में, be an indoors. There will be an indoor stadium in my village. गुड, तो इस तरह क्या करना है, इज और एम, इज आर या वाज वर की जगह हमने सिंपली विल भी लगा देना है। सही, Okay, sir. Okay, sir. जी, तो अभी क्या है, अच्छा अब विल बी में फिर जब हम नेगेटिव बनाते हैं, क्योंकि हमने पास्ट में भी नेगेटिव सीखा है कि किस तरह बनाया जाता है नॉट लगाकर, और प्रेजेंट में भी नेगेटिव सीखा है ना कि नॉट लगाकर ही हम, और हमेशा नेगेटिव हम लगाते ही किस तरह है, नॉट लगाकर। सही, तो अब यहाँ देयर वोंट भी क्यों लिखा है, क्योंकि ये है, मैं चैट बॉक्स में लिख देता हूँ, सॉरी राइट नाउ मैं चैट बॉक्स के मैसेजेस इसको पढ़ नहीं सकता, सही, बिकॉज आई एम ऑल्सो इन अ बिट ऑफ हरी। अच्छा, तो ये जो है ना देयर विल नॉट बी, ये हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर है नेगेटिव का। जब हम फ्यूचर के बारे में बात करते हैं तो देयर विल नॉट बी। जी, आपको जो है ना ये, सॉरी आपका मैं नाम भूल गया, आपको मैं ये फिर जो है ना इनबॉक्स में मैं व्हाट्सएप पे पर्सनली समझा दूंगा। सही, इसलिए राइट नाउ मैं आपको आंसर इस वक्त नहीं कर सकता, तो मैं आपको जो है ना इंशाल्लाह इनबॉक्स में व्हाट्सएप पे समझा दूंगा। अच्छा, अभी इसमें क्या करना है कि नेगेटिव का जो स्ट्रक्चर है वो क्या करेंगे आपके, देयर विल भी, जी अंसार, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, तो अंसार आपको जो है ना ये व्हाट्सएप पे मैं जो है इंडिविजुअली फिर ये मैं समझा दूंगा आपको। अच्छा, अब नेगेटिव में हम क्या करते हैं मिस मदिया के, विल बी को क्या कर लेते हैं, विल नॉट बी, या विल नॉट बी को हम सिंपली वोंट बी भी कहते हैं। अब ये जो सेंटेंस लिखा है ना, ये सेकेंड लास्ट जो है कि देयर वोंट बी एनी वीक स्टूडेंट्स आफ्टर दिस कोर्स, तो इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं, देयर विल नॉट बी एनी वीक स्टूडेंट्स आफ्टर दिस कोर्स। सही, सो हम सिंपली विल और बी के दरमियान में नॉट लगा देते हैं, या विल नॉट को हम वॉन्ट पढ़ते हैं। सही, सो इसमें से जो जुमला दिया गया है आपको, ये पहला वाला जो है कि देयर विल बी अ न्यू प्रोजेक्ट नेक्स्ट संडे, इसको काइंडली आप जो है ना नेगेटिव में चेंज करेंगे। There will not be a new project next Sunday. गुड, देयर विल नॉट बी अ न्यू प्रोजेक्ट नेक्स्ट संडे, और इसके बाद वाला जो लिखा है ये थर्ड वाला, देयर विल बी रेन दिस इवनिंग, इसको भी नेगेटिव में चेंज करें। There will not be rain this evening.
गुड गुड। तो इसी तरह क्या है कि अब हम नेगेटिव में चेंज कर देते हैं। समझ आ गई आपको अब तक ये पॉजिटिव ओके और सर, नेगेटिव थैंक की? यू। अच्छा जी, अभी आते थैंक हैं यू ये सर। क्वेश्चन। जी माय प्लेजर। अच्छा अभी क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अच्छा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन वाला भी इजी है, इसमें कोई जो है ना ऐसा जो रॉकेट साइंस नहीं है। क्वेश्चन में हम जब भी कोई भी हमें सेंटेंस दिया जाता है ना, जब भी हम क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब जो उस सेंटेंस का होता है हम हमेशा उसी से ही शुरुआत करते हैं। इस केस में क्या है, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास विल है, सही। तो इसीलिए हम जो विल लगा रहे थे ना ऊपर, तो हम क्वेश्चन हमेशा फिर इसमें फ्यूचर वाले में विल से शुरू करेंगे। सो विल लगाएंगे, फिर देयर लगाएंगे और उसके बाद बी लगाएंगे। ये इसमें क्वेश्चन का स्ट्रक्चर है, विल देयर बी। और उसके बाद क्या है कि बाकी जो सेंटेंस है उसी तरह ही हम बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, देयर विल बी अ न्यू प्रोजेक्ट नेक्स्ट संडे। अगर हम क्वेश्चन में से चेंज करेंगे, विल देयर बी अ न्यू प्रोजेक्ट नेक्स्ट संडे, सही। तो इसी तरह जरा आप ये रेन वाले जो है ना, देयर विल बी रेन दिस इवनिंग, इसको जरा क्वेश्चन में चेंज करें। विल देयर बी रेन दिस इवनिंग? गुड। और इसमें जो ये लिखा है, ये इसके नीचे वाला, देयर वोंट बी एस्टिंग फॉल्स इन द फ्यूचर, इसको जरा क्वेश्चन में चेंज करें। सर उससे नीचे जो है, जी जी। विल देयर बी एथनिक बर्ड्स इन द फ्यूचर? गुड गुड। तो इसी तरह हम क्या करते हैं कि विल देयर बी, ये स्ट्रक्चर और इसके बाद वो बाकी सेंटेंस वही रहता है। तो इस तरह हम करते करते क्वेश्चन में चेंज कर देते हैं, सही। सो जो फॉर नाउ ये आखिरी एक्टिविटी करते हैं आज के लिए। फिर इंशाल्लाह जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हमारा जो रेस्ट ऑफ द एक्टिविटीज हो गई हैं, ये भी हम इंशाल्लाह कैरी ऑन करेंगे उसमें। सो अच्छा, इस एक्टिविटी में हमने क्या करना है? सेम ऊपर तो लिखा गया है कि पॉजिटिव टू नेगेटिव में हमने चेंज करना है, सही। सो यहाँ पॉजिटिव का स्ट्रक्चर दिया गया है कि नेक्स्ट ईयर देयर विल बी पीस एंड हार्मनी एंड डिस्क्राइब योर विलेज इन द फ्यूचर। तो जरूरी नहीं है कि आप इसमें सिर्फ विलेज को ही डिस्क्राइब करें, इट्स अप टू यू, कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते, लेकिन आपने करना क्या है कि इसमें जो है ना, पहले पॉजिटिव में आपने कोई भी जुमला कहना है, फिर उसी को नेगेटिव में जुमला कहना है, सही। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट ईयर, अगले साल, देयर विल बी पीस एंड हार्मनी, अगले साल सुकून और आराम होगा। सो देयर वोंट बी वायलेंस, तो क्या होगा जब सुकून और आराम होगा तो वायलेंस नहीं होगा, सही है। वायलेंस मतलब तशद्दुद नहीं होगा। तो पहले में आपने पॉजिटिव कोई आइडिया यूज करना है और वोंट बी में फिर उसी का नेगेटिव आइडिया यूज करना है, सही है। सो यस, स्टार्टिंग दिस एक्टिविटी विद यू मिस आयशा। जी जी मिस आयशा। जी सर। जी सो ये एक्टिविटी में कोई सा एक सेंटेंस उठा ले एंड काइंडली उसका जो है ना आपने वो करना है, पॉजिटिव और इंट्रोगेटिव बना, सॉरी नेगेटिव बनाना है। There will be new house in 2035 and there won't be new house in अच्छा, न्यू हाउस की 2035. बजाय आपने कोई दूसरा आइडिया यूज करना है, सही है। कि जिस तरह हमने पहले कहा था ना कि माजी में ये चीजें होती थी लेकिन ये नहीं होता था, तो उसी तरह हमने फ्यूचर का कहना है कि फ्यूचर में ये चीज तो होगी लेकिन ये नहीं होगी, सही। तो इसी तरह आपने अपोजिंग आइडियाज उसमें शामिल करने हैं। जी Okay sir, वो in 50 years there will be mind. सर पता नहीं, मैं वो कहना चाह रही हूँ कि 50 इयर्स में वो कहते हैं माइंड्स में चिप्स आ जाएंगी, वो चिप लगा देंगे कुछ इस तरह yes, से। so you can say कि there will be chips installed in the minds, yeah, in the brains. Yeah. In 50 years there will be chips installed in the mind and there won't be in 50 years there won't be chips installed in the mind. No, you can say it, you didn't quite get it. करना इस तरह देखिए कि in 50 years there will be chips installed in the minds, but Yeah. there इसका फिर opposing idea के but there won't be any computers left, सही है। कि कोई कंप्यूटर नहीं होंगे, जब चिप हमारे माइंड में ही इंस्टॉल की जाएगी तो कोई कंप्यूटर लैपटॉप हमें यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इसीलिए कोई कंप्यूटर या और लैपटॉप मोबाइल्स नहीं भी होगा। सर वो कहते हैं आई थिंक वो एग्जैक्टली बॉडी में स्कैनर्स लग जाएंगे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सो जस्ट लाइक दैट कि कोई ऐसी चीज के
जिसका क्या है कि फिर उसकी जो है There ना won't जरूरत be है any नहीं पड़ेगी। device. Exactly, there won't be any devices. Good. Okay, yes, sir. Thank you very much. Okay. Okay, now going with you, Mr. Okas. Yes, sir. In 50 years, there will be the flying cars. Okay, and the negative? There won't be the conventional cars as we have today. Okay, great, great. But अच्छा इन दोनों, by the way, one more trick here कि आप इन दोनों sentences को combine करने के लिए बीच में but का word use कर सकते हैं। Yes, sir. मैं कर रहा हूँ. There Yes, will be yes. the flying cars in the future, 50 years, and there won't be the having cars as we have today. Good, good, great. Thank you very much. Okay, yes, next Usman Habib. जी जी Mr. Usman. So there, the day after tomorrow, there will be a meeting will be held. There will be meeting in my colony, and there won't be partying. Could you repeat it again? I didn't quite get it. The day after tomorrow, there will be meeting in my colony, Good. Yes. and there won't be partying. यानी कि मीटिंग होगी और लोग अलग-अलग नहीं होंगे. But there won't be any parting. सही है, good. अच्छा, yes, as my previous point, आप जो है ना इन दोनों sentences को combine करने के लिए and ना लगाएं, but लगाएं. हम उर्दू में कहते हैं ना कि तुम वहां जा सकते हो, लेकिन तुम जो है ना खाना नहीं खा सकते. लेकिन लगाते हैं ना हम जब अपोजिंग आइडियाज की बात करते हैं, जब हम एक आइडिया के खिलाफ एक दूसरे आइडिया की बात करते हैं, जब दोनों आइडियाज आपस में एक दूसरे के खिलाफ जाते हैं, तो हम उसके लिए बट यूज करते हैं. सो यू कैन यूज द सेम बट हियर. जी मुस्तफा, जी सर. काइंडली मेक अ सेंटेंस ये जिस तरह इन्होंने बनाई है. सर नेक्स्ट ईयर वाला बना दे. कोई से भी बना ली. जी. There will be in next year, there will be a Imran Khan in PM, but there won't be thief. Okay, good. Okay, that's a good sentence. चलिए जी. अच्छा, now yes, Miss Madiha. Yes, sir. Yes, kindly इसी तरह के sentence बनाओ जिस तरह ये लोग बना रहे हैं. Okay, sir. Sir, there will be my child are young in 50 years after. Yes, किस तरह? There will be. There will be my child are young in 50 years after. Okay, आप ये भी कह सकती हैं कि my children will be younger in 50 years. या my children will be older in 50 years. But there will be not we are young. But there will लेकिन be. हम जवान नहीं रहेंगे. But अच्छा, but We are will, young. yes, but we will not be young. Will not. जी, क्योंकि हम फ्यूचर Will की बात not? कर रहे हैं. Be young. Yes, sir. जी. वही. Okay. Good. Thank you. अच्छा जी. Yes, Miss Shahida, if you are available right now. Okay. Yes, Mr. Okas. Yes, sir. जी. Kindly do this activity. एक sentence बनाए कोई सा एक. The day after tomorrow, I will be buying the goat for the Eid al-Azha. And yes, I will be buying. There won't be any chance of buying the bull for slaughtering. Good, good. सही है. Thank you. And in the next 100 years, okay, we will be here in the hell or paradise. It is sure that we won't be in this world. But we won't be in this world. Good, good. Thank you very much.
अच्छा जी, right now I'm unmuting all of you. If you have any queries, you can ask me. अगर आपका कोई भी question हो जी। Sir, with me, I think my voice is a little problematic here. My battery of it's, handphone has yes, it's run just out. background noise जी, नहीं, it's just background noise, the rest is okay. So today your voice is perfect. I don't know why I'm using the same microphone. I have no idea. Maybe they were not plugged correctly the previous day. Yes, that sir. could Today I yes. didn't face any problem. Okay, so I think it's just a plugging issue, nothing more. जी, okay, and चलिए, अच्छा, by the way, I'll show you the slides here कि आगे हमारा क्या क्या रहता है. After that, yes. अच्छा, मिस मदीहा, आई हैव नो आइडिया कि ईद के बाद पहली क्लास कब होगी. वो फिर इंशाल्लाह हम आपको सरफराज भी आपको इन्फॉर्म कर देंगे. सही. सो आई माई सेल्फ हैव नो आइडिया राइट नाउ कि हमारी ईद के बाद कब क्लास होगी. तो अच्छा, दिस इज अनदर रोल प्ले एक्टिविटी के साइंटिस्ट और फ्रेंड उनके बीच क्या कन्वर्सेशन होती है अबाउट द फ्यूचर. सही. उसके बाद फिर ग्रैंडसन और ग्रैंडफादर या ग्रैंड डॉटर की जो है ना रोल प्ले एक्टिविटी है अबाउट द पास्ट एंड द फ्यूचर. इसके बाद हमारे कार्डिनल और ऑर्डिनल नंबर्स आते हैं. सही. ये इनके हवाले से छोटी मोटी एक्टिविटीज एंड देन फाइनली वी आर लेफ्ट विद दिस टंग ट्विस्टर. सही है. सो ये एक्टिविटीज इंशाल्लाह आफ्टर ईद हम जो है ना ये कैरी ऑन करेंगे, कंटिन्यू करेंगे. सो चले, इफ देयर इज एनी क्वेश्चन यू वांट टू आस्क राइट नाउ. जी, ओके, चलें जी. सो विश यू ऑल हैप्पी ईद. ईद मुबारक हो एडवांस में आप लोग के लिए पहले से. तो अच्छी तैयारी करें. जी उस्मान हबीब, सेम टू यू. तो अच्छी तैयारी करें, खूब एंजॉय करें. इंशाल्लाह फिर हमारी क्लास जो होगी सैटरडे को भी, आई डोंट थिंक कि कल आप लोग की कोई अच्छा, कल तो खैर बैच 2 की क्लास थी, बट हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो फिर इंशाल्लाह ईद के बाद होगी. जी मिस्टर वकास. सर जी, लास्ट टाइम हमने रिक्वेस्ट की थी कि कोई जी, ग्रुप हो जिसमें अगर कोई वॉलेंटरली अगर कोई प्रैक्टिस करना चाहे करंटली टॉपिक्स पे तो वो कर सके. तो जी. इस पे सर कोई तो एडवांसमेंट है या आप करना चाहेंगे या अलाउड है या नहीं है अच्छा, काइंडली. अच्छा, ये चले, मैं सर फहद से फिर भी पूछ लूंगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये उनको. प्रैक्टिस चलती रहेगी. जी, अच्छा, नहीं, वाकई ये मैंने सरफराज से मैं दोबारा भी पूछ लूंगा. ऑलरेडी मैं उनको इन्फॉर्म कर चुका हूँ. सो मुझे लगा मे बी अगर उन्होंने कोई स्टेप लिया हो तो मैं चले आज फिर से उनसे पता कर लूंगा. सही है. राइट सर. जी, सही. बिकॉज और असल में सर एक. काइंडली क्लासमेट से जी, भी कह दीजिएगा अभी कोई वॉलंटरली इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है तो ये वेलकम जी, किया जी, जाएगा. जाहिर है प्रैक्टिस होती रहेगी. एग्जैक्टली क्योंकि मेन मकसद प्रैक्टिस ही है हमारा ना. क्योंकि जी, तो मैं इंशाल्लाह सरफराज से आज जो है ना इसी हवाले से फिर से बात कर लूंगा मैं. ओवरऑल सर क्लास बड़ी अच्छी जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह. हम फील कर रहे हैं कि ये वाकई कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमने पहले नहीं कभी देखी थी या इस ऑर्गेनाइज्ड तरीके से शायद पहले नहीं कभी देखी थी. जी, जी. सो बस हमारी कोशिश तो ये होती है कि वी वांट टू प्रोवाइड यू विद द बेस्ट. और सिर्फ हमारी कोशिश ये नहीं होती कि वी आर टीचिंग यू, वी आर एक्चुअली लर्निंग एज वेल. तो आप लोगों से हम भी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, मुझे जो एक चीज़ वाकई पसंद है, वी और आप सब लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे होते हैं. हमारा जो शुरू में टॉपिक्स होते हैं मुख्तलिफ टॉपिक्स, ऑल ऑफ यू आर शेयरिंग एक्सपीरियंसेस. तो हमें भी, मी बीइंग यंगर देन यू, तो मुझे भी सीखने को बहुत कुछ मिलता है. बिकॉज आई थिंक एक्सपीरियंस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग कि इट इज़ अ शॉर्टकट टू लाइफ. कि जब आपको कोई अपना एक्सपीरियंस बताता है तो वो एक्चुअली आपको लाइफ हैक्स बता रहा होता है कि व्हाट यू हैव टू डू एंड व्हाट यू डोंट हैव टू डू. जी. सो वाकई लर्निंग मेरी पर्सनली भी बहुत होती है माशाल्लाह से. तो चलिए जी. अच्छा, इंशाल्लाह Yes, फिर. sir. All activities are based on the brain exercise and brain opening activities. एग्जैक्टली इट हैज टू बी, क्योंकि इट कैन नॉट बी डन एनी अदर वे. उस तरीके से तो हो नहीं सकती Yes. कि आपको जो है ना सेंटेंस का स्ट्रक्चर हम बार बार रटा रहे हों. जी. तो चलिए जी, लेट्स कॉल इट टुडे. इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू दिस एक्टिविटी आफ्टर द ईद. तो आप सब अपना ख्याल रखें एंड ईद मुबारक वंस मोर. थैंक यू वेरी मच. Eid Mubarak, sir. Thank you so much. ईद मुबारक, ईद मुबारक. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज, अल्लाह अल्लाह हाफिज. हाफिज, अल्लाह हाफिज.